जब ये डिस्कोर्स होता है, डिबेट होती है डीकोलोनाइजेशन की, द assumption is कि the people or the academics in low and income countries will be happy about it. It's actually, अगर इनवाइट नहीं आ रहा है, probably we don't want the debate. So before I start, just a क्या कहना चाहिए, brief introduction, like personal why I am the way I am. So मेरी formal training global health में is in process. I would say I'm waiting for my defense on 29th May. मेरी PhD है global health में with a focus on human development from the University of Bergen in Norway. And I was raised by a father who was a fan of Allama Iqbal, so much so कि मेरा नाम मुनीरा इसलिए है कि अल्लामा इकबाल की बेटी का नाम मुनीरा था. So even before I knew the word decolonial, I think it was something that probably मेरे subconscious में बचपन में it was happening. And I remember, अगर जो लोग मेरे ज़माने के या पुराने हैं, BBC उर्दू न्यूज़ आया करता था, एक बड़ा मकबूल होता था उस ज़माने, पाकिस्तान के रात के 9 बजे आता था. And my father used to hear it, like he was a follower. हम भी साथ सुनते थे, at least I used to. And some of the conversations I still remember I had with my dad about the kind of words and terminologies that he used when we talk about people in Palestine or Kashmir versus people who are not part of this world, or किस तरह के अल्फाज use किए जाते हैं, and what's the narrative that's built. Some of these things, I think they were back of my mind. And also, I was trained as a clinical psychologist. And it's something that I feel is not many people actually are with psychology background in global health. ज़्यादातर जो global health training से हैं या मैं MBBS या medicine करके आते हैं, which has a very biomedical approach, which is the physician knows everything, which is just the other way around. When you have it in psychology, actually, it's a, when you decide for a client, it's a gross violation of the standard of care. So when I started seeing these things in global health, इतना top down approach है कि कोई बैठ के Seattle में या Geneva में, very removed from our communities, they design what should happen here, and what the most has happened has been tested in US middle class families, and we think it's going to work here. That was something that was very unsettling for me. But over the years, I think it took me some time to realize that I'm not crazy. Actually, these things make sense. So I start with what I saw wrong with global health. It's based on my own experiences rather than textbook definitions. क्या है global health? What's structurally wrong with this field? What can we do? And then, of course, closing with some of my reflections on what I have done. So what is global health really? You know, when people talk about global health, पहला ख्याल शायद आता है कि there's a lot of funding, there is prestige, there is travel, and maybe also you get to make a lot of impact. और आप communities के लिए काम कर रहे हैं और बहुत noble काम कर रहे हैं शायद. But that's not that what I have seen, or that's not what I have lived or what I have witnessed. It's very, very different from what is the क्या कहना चाहिए narrative है, जो image है. And I think that's what I'm trying to talk about. And maybe that's not experience for other people, but that's from the lens of someone who has been into decoloniality with the name when she was born. So classic model global health का क्या है? There are people or they're academic researchers sitting in the global north. They design research questions. They have interventions in mind. चाहे वो maternal and child health के लिए है, immunization के लिए है, and then they have a partner in the global south, in a country like Pakistan or Kenya or Bangladesh or whatever. And but some of these poor countries, which is LMIC. So they come in and they bring you money, of course, not major chunk, but major chunk goes into their own countries. And they will travel to your field site if needed. Data collect करते हैं, or we help them to collect data. And then what for the incentive for the PI in this country is come local PI कहते हैं, which to me again is actually something is very unsettling. कि why am I a local PI? Why PI तो PI होता है? Why? So what you get is you glorified as a data collector in your own country, because if the research questions and the research agenda and the funding, it all lays with someone in the global north. What's my role in this? What results in is के आपको credibility तो अपने locally मिल जाती है. You know, people see you as someone who's bringing a lot of money, but the real authority to influence or shape the discourse, for example, within maternal and child health care या child development care, you don't get that. That actually lies with
people who are sitting in the West, because they publish, they are seen as credible, they are seen as scientists, they have access to editors. अगर आपका Lancet is based in UK, अगर आप London School में है, you have much more access to the editorial team, you have much more access to the global health team, like BMJ global health team. They also have access to data sets because as part of your contracts, the data belongs to the donor or it belongs to the जहाँ से funding आ रही है, maybe the global north. And of course, they also have greater capacity in terms of writing. They have actually teams. हमारे पास एक postdoc आया था US and he used to say we have an army of writers. And that's how their academic incentives run कि उनको लिखना है. Of course, जो article processing charges हैं, Lancet के I think is more than $7,000 now per paper. With Nature is probably $10,000 or more. So we cannot even हमारे लिए तो salary भी नहीं है इतनी एक महीने की. So of course, all these inequities add up, and what happens is when they are the ones who publish, they are the ones getting the grants. So authority किसके पास आती है, फिर हमारे पास नहीं आती है. So we can be happy here. And what happens is, of course, funding then becomes not just a control of agenda, but also a control of imagination. Because when all that what's being imagined of our problems is what are solutions in the North, then they're also controlling our imagination. So what is valued in global health? Kya values and what gets funded actually? So my journey starts in 2009, February 2nd. I think it was a Monday. इसलिए 1st February was Sunday. So it started with an elite international academic medical center, जिसको I think पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा funding probably इस university में आती है, followed by I think WHO जो पाकिस्तान country office है. And I was आते भी सोच रही थी, I was too naive, इसको बुद्धू कहते हैं शायद. I was a practitioner and I had no idea of how academia works. Global health तो बहुत दूर की बात. I didn't know it was actually called global health. I just wanted a job. I newly moved to Karachi. Or job I think it was a child development project and I was excited by it's an Aga Khan or child development and that was something my expertise. Research है तो क्या हो, at least I'm at Aga Khan और मेरी अपनी field है. And the first study I was part of the PETS trial. I joined in 2009. It was published in the Lancet in 2012 when it was published in 2014. I think finished in 2012. It was a seminal trial. और ट्रायल में ये था कि it was a parenting intervention like using lady health workers who are part of the government program. You train them to how do you coach mothers to play and interact with children in certain way जिससे बच्चे की development में improvement आ सकती है. And we did find benefits. Of course, Lancet में publish हुआ था and बहुत ज़्यादा international acclaim हुआ. उसके बाद बहुत सारी funding also followed into this field because the trial had shown. Again, that's also a problem I talk about in my next few slides. Because it was a randomized controlled trial, so that's enough as an intervention as evidence. And there were benefits for children, for mothers, and intervention team and lady health workers. But the question that was bothering me, अगर ये इंटरवेंशन इतनी ही अच्छी है और इतनी ही इफेक्टिव है, आखन हॉस्पिटल में भी तो बच्चे आते हैं. वहाँ आउट पेशेंट में आई थिंक आई डोंट नो एवरी ईयर 6,000 बच्चे तो आई थिंक न्यू बॉर्न है. प्रॉब्ली 70,000 80,000 OPD विजिट्स हैं आपके. सो why are these children being deprived of these interventions? Similarly, 2009-2010 में I think I was on maternity leave 2009 के एंड में probably yes. और हम टीवी पर उन दिनों एक ऐड आया करता था अबाउट न्यूनेटल केयर. बहुत सारे मैसेजेस थे LSW के बारे में कि जब बच्चा पैदा होता है आपको क्या क्या करना चाहिए. उसमें एक मैसेज था जो मुझे याद है कि आधे घंटे तक बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए, ना कीप देम वार्म. बट व्हेन बोथ किड्स वर बोर्न, वन इन 2009 2011, दोनों को तो फौरन नहलाया था. सो वाइल द सेम हॉस्पिटल जो आपकी रिसर्च कर रहा है और आपकी टीवी पे भी ऐड जा रहा है कि यू वेट, व्हाई इज माय चाइल्ड नॉट रिसीविंग, या उस वो वाली पॉलिसी गाइडलाइन यहाँ क्यों फॉलो नहीं हो रही है. At least one of these kids was being wronged. And why is that research? You need certain kind of community that has to be the guinea pig for your research. And why not the children in the hospital, which is under your own? वो भी आपका अपना ही है. I mean, you could do in both community में भी hospital, but I haven't seen कि जो community में होता वो hospital में आता हो. In 2012, I traveled to the US for first time, and I was a part of a project called Malnutrition Enteric Disease Study. Across 8 sites, 4 South Asian, India, Pakistan, Bangladesh, and Nepal. 2 were in Africa, South Africa, and Tanzania. And 2 were, I think, Peru or Brazil, 8 sites. And
2,000 children, around I think 200 children per side थे, उससे थोड़े ज़्यादा. $42 million study across 8 sites. और आप स्टडी क्या कर रहे हैं कि व्हाट्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटरिंग इन्फेक्शन, सेल malnutrition, एंड देन दे लेटर ऑन एडेड के ब्रेन डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट आता है. So this is how I got to be part of the project. And when I visited, it was a 3-day meeting थी, 5-day meeting थी. So there were 5 people from each site, like 40 people, and of course the American PIs, 50, 60 people meeting once a year and sitting around and talking. इसी तरह का रूम था, शायद इससे भी बड़ा था, और डेटा वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और डेटा इस तरह का, इट्स वेरी इंटेंसिव डेटा कलेक्शन. कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी देयर वाज. लाइक द फर्स्ट पूप ऑफ द चाइल्ड, सुबह 5 बजे कलेक्ट करना है, तो टीम्स जा रही हैं, सारा दिन कितनी दफा बच्चे ने पूप किया वो कलेक्ट करना है, आपने बेलिस के असेसमेंट्स करनी है, बच्चों को ट्रांसपोर्ट करना है, मैटरनल डिप्रेशन भी है, एंड देयर वर so many other data. And sitting in that room, when these numbers were being discussed, the feeling you get is, for them, these are not humans, or these are not kids, these are numbers. These are statistics. अब हर बच्चे के पीछे एक लाइफ है, एक फैमिली है. Somehow when you just talk about the science and without the humanity of that family, that felt very wrong to me. अगर आपने डायरिया ही खत्म करना है, there are many more efficient ways of doing it. अगर इन फैमिलीज के पास साफ पानी नहीं है, of course there's gonna be problems. So yeah, waterborne diseases होंगी. But somehow these white PIs और हमारे अपने भी, they interested like, अगर बच्चा इतना वेल नरिश्ड है, या अगर इतनी दफा पूप करता है, तो उसके ब्रेन पे क्या असर हो रहा है, या घर के एनवायरनमेंट इस तरह है और बच्चा इतने दिन भूखा है तो इसकी लैंग्वेज पे क्या असर हो रहा है. At some level it feels kind of dehumanizing. And there are some studies जो फील होनी ही नहीं चाहिए. लाइक डू रियली नीड टू नो, अगर बच्चे को आप स्कूल मील प्रोग्राम देंगे, इट्स गोना अफेक्ट देयर लर्निंग. भूखा बच्चा भूखे तो नमाज भी जाए, कहते हैं कि पहले खाना खा लो फिर नमाज पढ़नी चाहिए, बट येट इट्स इन अ रैंडमाइज्ड क्लस्टर कंट्रोल ट्रायल, which means there is a control group, which means there is a group that's hungry but is not being given food, and this is happening probably in an African country somewhere in Ghana. और पहला नाम क्या है? I can't read. Not an African name at least. So these are white people getting loads of money to do an RCT. They come into African countries. They deprive a certain group from meals and food, and these are hungry kids. And it's being published. And then these are how guidelines are being made. This was an ad a few years ago. Lego ने जो है ना ताजमहल लॉन्च किया है, and it's an Indian monument. पैसे कौन बना रहा है? डेनिश कंपनी. और हमें क्या ये एडवाइस करते हैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के तो लेगो ब्रिक्स है, हमारे मॉन्यूमेंट्स पे होममेड टॉयज होनी चाहिए. भाई होममेड टॉयज कैन नॉट compete with your Lego bricks. So the message is, when you are poor, you deserve less. You just go away with homemade toys. Be content with it. अब गरीब हो क्या करेगी, इसी पे गुजारा करो. And some of these जब लैंडसेट आप पढ़ना शुरू करें, लैंडसेट ग्लोबल हेल्थ में पेपर पब्लिश हो रहे हैं, भाई हाई इम्पैक्ट फैक्टर है, और स्टडीज क्या आ रही हैं कि हैंड वॉशिंग के डिफरेंट काइंड्स है, व्हाट्स द मोस्ट इफेक्टिव. Do you really need it? I think hand washing is a basic human right. आपको पानी का एक्सेस होना चाहिए, हाथ धोने चाहिए. अगर हैंड स्टेशन इस तरह का है और उस तरह के, उसमें ये ऐड कर दो, उसमें वो ऐड कर दो. Probably PhD study. This is again happening in African country. You don't see this kind of studies from Norway or Sweden or maybe Germany. शायद वो थोड़े, maybe they're more humans than us. या कभी कभी इट्स कन्वीनियंस. डायरिया की स्टडीज होती हैं, घर में पानी नहीं है, लेडी हेल्थ वर्कर्स या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, इस पे भी आर्ग्यूमेंट होता है कि इनको पे नहीं करना चाहिए. दे शुड डू इट वॉलंटरीली. हम खुद कोई काम नहीं कर सकते वॉलंटरीली. कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आपकी वॉलंटियर होनी चाहिए. घर घर जाएगी और मदर को बताएगी, लाइक दे हैव अ पिक्चर बुक, के हाथ कैसे धोने हैं या बच्चे के लिए खाना कैसे बनाना है. अब घर में पानी ही नहीं आ रहा है, मतलब ऑफिस में आप यकीन अगर सोचें पानी बंद हो जाए और हम आपके पास लेडी हेल्थ वर्कर भेज रहे हो, कह रहे हैं कि कुछ अरसा या महीना 2 महीने आप गुजारा, दिस इज नॉट एन हाउ द इंटरवेंशन वर्क्स. अगर आप समझते हैं पानी प्रोवाइड करना इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ए वर्क, then probably don't do it. You're not supposed to be. A public health intervention should not be lady health worker visiting home to home for diarrhea. But this is big study again funded by the Gates Foundation, Bangladesh और एक और site है इनकी कहीं Kenya में. And these are very strategic priority sites. Bangladesh, Kenya. The deeper issue is the field operates on a model of sympathy. When you empathize, and I come to it, the kinds of models you see that stem from empathy are very different from what you see in global health.
And what we somehow I think we are uncomfortable. We don't want to look at what is causing these problems. अगर इतने घरों में साफ पानी नहीं है, पानी का एक्सेस नहीं है, the problem is not that we should be researching. The problem is something else. Probably it's advocacy, and compassion is more than flinging a coin to the beggar. It's not haphazard or superficial, you know, and this is how global health has been running. पैसा कुछ इधर है, कुछ इधर है. These are recent calls. मैंने Gates Foundation की website पे जाके check किया, and I have highlighted what's the common word that you see in both of these titles. And cost, reduced cost. हमारी ह्यूमन लाइफ को जज करते हैं इस पे इंटरवेंशन करना है या नहीं है अराउंड कॉस्ट, लो कॉस्ट. इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी. लो कॉस्ट होना चाहिए. आप कीमत कम कर दो, वही बात है, गरीब हो, कम में गुजारा करो, यू नो, गरीब मुल्क से हो तुम. But the real magic is, and these are, I think, maternal child health interventions. Yeah, I can't see. Malnutrition or something I don't see. But anyway, maternal child health में भी बहुत ज़्यादा donation या funding है. I visited Nashero Firoz, हमारी field site थी few years ago when I was working. तो rural health center पे I met a lady who was a physician, like a gynecologist, या obstetricians जो होती हैं. And then she had moved from Karachi to Nashero Firoz. And I was a bit surprised कि ये लोग वहाँ से कराची जाते हैं, कराची से कोई यहाँ भी आता है. And I asked her like, how is the work here? How do you find? Is it easy? Is it difficult? कह रही यहाँ actually काम बहुत आसान है. And I said why? कहती जब यहाँ बच्चा मरता है, फैमिली उठ के घर चली जाती है, हमसे कोई सवाल ही नहीं करता है. कराची में किसी का बच्चा मर जाए तो हमारे गले पड़ जाते हैं. द एक्चुअल प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं हमारी कम्युनिटीज में, इट्स द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट्स द वैल्यू ऑफ दैट वुमन, इट्स द वैल्यू ऑफ दैट चाइल्ड. यहाँ हम गरीब इलाकों में ही होता है, औरत मरती है तीसरे दिन या दूसरे दिन ही दूसरी शादी हो जाती है, यू नो, यू गेट अनदर वुमन टू बी अ किड्स फॉर यू. बट इट्स नॉट एज इजी. आपके जो शहरी इलाके हैं, ऑफ कोर्स इट्स मोर अकाउंटेबिलिटी एंड फैमिलीज probably know their rights and know that they can question these physicians. They can even that woman is again ready to give birth the next year. So जो आपके core problems है, we reduce them to logistics problem. के I was seeing the other day LinkedIn पर बिल गेट्स का कोई वो था, पोस्ट था, एंड कोई इन्होंने फंड की है इंटरवेंशन जिस अराउंड कम्यूट, कि उन्होंने कोई एआई मॉडल लगाया है, कोई फैसिलिटेट किया किसी तरह गाड़ी अवेलेबल होनी चाहिए. इस रियल इंटरवेंशन. हर इंसान को पता है अगर गाड़ी अवेलेबल है, कम्यूट है, तो यू कैन रीच दीज सेंटर्स. So you're hailing logistics problems at the core problems of society. The actual problem may be कि permission नहीं है, decision making नहीं है, or even worse, these women's lives are seen as disposable. Who is going to work on these issues? कि value of human life को आप कैसे upgrade करें? So Play, Learn, Thrive, this was a call for proposals by Grand Challenges Canada and Lego Makes Bricks. And I'm not sure if it is clear. What they speak about is to address gaps in early childhood development in emergencies, and call support project to strengthen support for children birth to 12 years, Jordan, Lebanon. And when you see the details of the call, you are actually restricted. कि आपकी जो intervention है, it should be play based. And coincidence के Lego भी play वाली toys बनाता है, you know, बच्चों के लिए. And it should be something that the mother is coaching the child, and it should enhance their cognitive development. So what you're doing is, ये वो बच्चे हैं जो emergency context में हैं, they're in war zones and in conflicts. What you're assuming is उनकी development जो है वो delayed है, and इस किस्म के toys से आप खेलेंगे तो development will improve. And maybe they're right, I don't know. जो literature है आपका, it doesn't, this is what it actually contradicts what they're doing. And ये वाला जो review है 2022 में आया, and they talk about they reviewed all the intervention in war zones. छोटे बच्चों पे interventions वैसे ही कम हैं, and what they say is what you need to emphasize with all children, especially young children, is maternal mental health. Safety of the child is way more important, and the most effective way is a regulated mother. अगर mother खुद सुकून में है, उसका environment सुकून में, she is going to that's going to improve or impact the child's own maternal health. बच्चे की अपनी trajectory इतना impact नहीं करती है जितना mother की mental health impact करती है. This is what the review suggests. And this is a video from Gaza, जो कि can play. कुछ दिनों पहले ही मैंने देखी है.
So if you're someone who works, if you're someone who works with children or who have their own kids, पीछे जाओ, पीछे. बच्चे को देख के आपको अंदाजा हो रहा है if they are actually enacting what they see in daily life. And to do that, you need certain level of cognitive skills. इसका मतलब है their cognitive skills are intact. Their motor skills are intact. They're also growing together, talking social skills, language skills are also there. So why are you bringing intervention what which they don't need? What they need, stability in life. They want to see much more than funerals happening in their environment. लेकिन अगर आप उसको फंड करेंगे तो you have to reckon with the reality that they are the ones behind the genocides and war system and they keep your humanity separate from their interventions. आगे नहीं जा रही. आई थिंक ग्लोबल हेल्थ की बात करें और बिल गेट्स की बात ना हो और एप्स्टीन फाइल्स की बात ना हो, यू नो गेट्स फाउंडेशन एनुअल बजट इज प्रॉब्ली $6 to $7 billion, ये शायद इससे भी थोड़ा ज्यादा है, और हम $1 बिलियन की ट्रांच के लिए IMF के तरले मिलते कर रहे हैं. तो इमेजिन हाउ मच पावर एंड मनी दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस फाउंडेशन हैज, and the influence that one individual has over health of billions of people. And what's more important to me is इतना पैसा होने के बाद, आई थिंक दे हैव सेट $2.5 billion दे प्लेज फॉर वुमेन हेल्थ. इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आई डोंट सी ए चेंज इन वुमेन्स हेल्थ. $1 बिलियन पे हम अपना मुल्क चला सकते हैं. हम उस एक लाइक वी आर ब्रिंगिंग ए ट्रांच लाइक मे बी फॉर ईयर और समथिंग, आई डोंट नो. So there is something wrong, you know, something misaligned. If that much money is being invested, where is it going? Why are we not seeing it? Or is it because they don't want it? If the founder is someone who has been friends with the Epstein class and the kind of things that have been happening on those islands, if that's what you're doing, there is a misalignment between what you say and what you do. And I think the scary part is there was a paper in BMJ Global Health. Kitni amount of funding? I think Gates is the second contributor to World Health Organization. And with the US country withdrawing, they're the top contributor now. And they are the ones deciding what should be, कहाँ funding जानी चाहिए, कहाँ नहीं जानी चाहिए, कौन सा agenda important है, कौन सा नहीं है. And what this data tells you, or this review, is that they fund infectious diseases. They don't fund system strengthening. So what happens is you see parallel processes. So you may see a research or intervention that can go into the community, but it cannot be implemented within your own hospital, within your own setting. और पैरेलल एजेंडा जब आते हैं और पैरेलल पैसा और पावर, ज़्यादा ही पावर आती है. So you can see what then overtake within our own institutions and what can happen. Another example I have is from Nestle. Nestle also has a foundation. They also fund WHO. And then recently there has been, I haven't, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, but there was a case study from the US, how Nestle has been lobbying against maternity leaves. फिर औरतें घर बैठेंगी तो उनके फॉर्मूला मिल्क कौन लेगा, because they will be breastfeeding. Plus, there has been a recent investigation in Africa. The level of sugars they add for formula milk, या फिर for Cerelac, for African children, is way more than they do for European countries. Yeah, I read that. And yet they are the ones funding, you know, WHO में पैसा भी आता है इनका. So what has happened is charity has become a substitute for justice. And philanthropy, जो है ना, if elite charity is narcotic, it numbs the oppressed just from building the times. जब आप philanthropy पे रन करते हैं public service good, this is what's going to happen. And I used to wonder कि ऐसा क्यों है? क्या मेरे दिमाग का फतूर है या मैं ज्यादा सोचती हूँ या लोग बोलते हैं कि शायद conspiracy theories हैं, but this is a book that came out in 2021 by Jim Downs, White Man. तो इसको believe करना चाहिए, of course he's a white man. So so what he has written is जो last इसका statement है इसकी book से है, या the review इसका Richard Horton ने publish किया था Lancet में. Slavery is imprinted on the DNA of epidemiology. So all हमें सिखाया तो ये जाता है कि Jon Snow is the Baba epidemiology, but this is not where it started. It's actually started in 17th and 18th century, जब ये slave ship पे भर के लोग लेके जाते थे across the Atlantic. So it gave them a very unique place to study epidemiology. कि कोई infectious diseases है, अगर कितने लोग आप एक रूम में रख सकते हैं तो infections ना फैले. You know, some of these research questions
came out from slavery. And this is on the second page of the chapter. So it starts with the story of a slave. Or slave जो है is not happy with his fate. And he resists, or woman, he refused eating. And on eighth day, he actually died. He couldn't survive. He actually, I think, शायद suicide का भी attempt था उसने. So if you see what I've highlighted, कि इसकी जो case study है Lancet में publish की, फिर किसी physician ने heard the story, it wasn't the brutality that mattered to that author, though he recognized it. It wasn't the violence of the slave trade, though he did. It was that the enslaved African man had survived for a week without eating. That was what mattered to Thompson. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सी. आपको वो भूखा नंगा बच्चा आपको मैटर नहीं करता है, वो कितने दिन भूखा रहे तो उसके ब्रेन पे क्या असर है. अब तो एडवांस हो गई है उनकी साइंस, अब तो पोर्टेबल एमआरआई आ गए, वो ये देख रहे हैं कितने दिन भूखा रहे तो उसके ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, उसके एमआरआई देखने का हम दिल चाह रहा है. आई मीन विद नो ऑफेंस टू पीपल हु आर डूइंग दिस रिसर्च, बट व्हाट्स द इंटरवेंशन दैट्स गोना कम आउट ऑफ इट. जितना भी आप ब्रेन स्कैन कर लें, व्हाट डज ए हंग्री चाइल्ड नीड? इट्स फूड. So this systematic violation as knowers, as contributors, as agents of change, and now I see myself even as critic. White man की critic ज़्यादा important है और it's more credible है. So that as I have described, आपकी knowledge उनकी नज़र में important नहीं है, आपके methods उनकी नज़र में important नहीं है, हमारा labor भी important नहीं है. Though we are doing everything on the ground, you cannot be lead authors, you cannot be the lead. आपका grant नहीं मिल सकते. Things are now changing with people speaking up. So why dignity cannot be donated? Because then it starts questioning the status quo. You know, if you start seeing me as a human, your research questions will need to be different. You will need to see my humanity and what you have done with coloniality or colonialism over the years and still continues. You will have to undo that. And that's not going to happen. And then I think जब आप लोगों से बात करते हैं वो आपसे कहते हैं कि बट पैसा ही इतना है, पैसा बहुत कम है, इसमें इतना ही हो सकता है. इज डिग्निटी रियली टू लॉफ्टी ए गोल कि हम वाकई छोड़ दें ये सोचना है कि हमारी भी डिग्निटी के हिसाब से स्टडीज डिजाइन हो सकती हैं. आई वेंट टू नेपाल इन 2023 एज पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी. हमारे इम्प्लीमेंटिंग रिसर्च पार्टनर था, दे मेड अस विजिट देयर हॉस्पिटल. उन्होंने हमें वीडियो दिखाया हाउ दिस प्लेस वाज लाइक, फाउंडर कौन थे इनके, और इसके तस्वीर कट गई. लाइफ ऑफ पर्पस है टाइटल, इस मैगजीन पे इनका इंटरव्यू था. दैट्स अ हॉस्पिटल. एंड जो उनके हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर थे इज एन एसोसिएट प्रोफेसर आई थिंक, एंड ही सेड कि मैंने अपनी अम्मी का इलाज भी यहाँ से कराया है. कह रहा हमारे लिटमस टेस्ट क्वालिटी का ये है कि हम अपना और अपने प्यारों का इलाज यहाँ से कराते हैं, विच इज एक्चुअली एम्पथी, यू नो. एंड इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम लो कॉस्ट. कि माई वैल्यू, माई लाइफ इज नॉट बट लो कॉस्ट, इज अबाउट हाई क्वालिटी केयर जैसे आप चाहेंगे. दैट रिमाइंडेड मी ऑफ अवर ओन SIUT. यू नो, ये अदीप साहब का कोट इज सो सो डियर टू मी. We cannot let them die just because they cannot afford to live. So when you can embed dignity in your work, चाहे वो हेल्थ केयर है चाहे आपकी रिसर्च, you just needs a heart that can feel. And related to this is, लोग कहते हैं कि फिर हमारे यहाँ फिर कहाँ पब्लिश करें अगर आप लैंडसेट पे आपको. Actually Lancet published a critique of its own in 2024 and how they have played a role in perpetuating some of these ideas. And करना चाहिए नहीं करना चाहिए लैंडसेट में. I think the same way where people have been divided over Malala and they have been divided over Sharmeen Obaid, I think Malala gets the most hate. I think the problem is not that the individual is receiving these awards. The problem is the value that you place on these awards. अगर नोबेल पीस प्राइज ओबामा को भी मिल रहा है, is it something that you need to worry about कि मलाला को मिला है? I don't know. I think what we need to think of this is this an end or a means to an end? आपने लैंडसेट में पब्लिश कर 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 करके जो क्रेडिबिलिटी बनाई है उसका आपने किया क्या है ग्राउंड पर? उससे मेरे लोगों को क्या फायदा हुआ है? If that's not happening, then I think we need to start valuing people with a pinch of salt. If all that you have done in your life is published in the Lancet, and I don't see it on the ground, then you have served yourself. And I also think it's, as a nation, बड़ा हम बहुत जल्दी polarize हो जाते हैं. It's very easy to hate. But the difficult thing is to create something of value. कि आप अपने अवार्ड सिस्टम क्यों नहीं बनाते हैं? आप अपने लोगों को क्यों नहीं इतना वैल्यूबल कोई चीज बनाएं कि हम उनको खुद अवार्ड करें? दिस इज ए स्ट्रीट इन ईरान. एंड इफ यू नो Babi Sanders, he was an Irish freedom fighter. I think he went on a hunger strike and he died.
तो उसको ऑनर करने के लिए ईरान ने क्या किया, दे चेंज द नेम ऑफ ए स्ट्रीट टू हिज नेम, एंड द स्ट्रीट दैट दे चोज फ्रॉम पूरे सिटी में से जिस पे ब्रिटिश एम्बेसी थी. And as per the website, the British embassy didn't like it. अब I don't know सच है कि झूठ है. And like they still, उन्होंने फिर दो स्ट्रीट को लिखी हुई जो स्ट्रीट के साथ है वो इसका नाम नहीं. तो अगर वो आपको जला रहे हैं ऐसे लोग अवॉर्ड करके, आप तो जैसे अवॉर्ड बनाए. डू द हार्ड वर्क. इट्स इजी टू क्रिटिसाइज. अगर उन्होंने चलो एक नाम बनाया है या अपने इन्वेस्ट किया जर्नल्स में फॉर ओवर द इयर्स, आई थिंक द थिंग इज नॉट टू क्रिटिसाइज पीपल हु आर डूइंग इट. वी नीड टू हैव ऑल्टरनेटिव. तो हम खुद अपनी कोई चीजें बनाएं. Should I continue? I can stop here. Oh, okay. क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हो गया है. Okay. Okay. So then people think, I always wondered why didn't someone do something about it? Then I am someone, you know. लोग मुझे कहते हैं कि यह सवाल ये कहेगा, पैसा तो आ रहा है ना, हमारे घर तो चल रहे हैं, कैरियर भी बन रहे हैं, रिसर्च भी हो रही है, तो why are you so critical about it? And my answer to that is I have been thinking ये ईरान वॉर जब स्टार्ट हुई है, मिनाब स्कूल में अटैक हुआ है, स्कूल was bombed. 168 girls were killed. Can you imagine that happening in the Europe or in the UK or Canada or US? वहां अगर हो तो कोहराम मच जाए, बॉम्ब पे बॉम्ब गिराया जाए, पूरा मुल्क तबाह हो जाए. बट वी हैव बीन सो desensitized to our own dehumanization, क्योंकि यहाँ आने से पहले they know us through their media, they know us through academic health और या जो उनका जर्नल्स हैं, and what they know us is we are deficient, we are poor, हमारे मर्द बहुत बुरे हैं, हमारे औरतों के साथ बहुत बुरा होता है, and somehow subliminally they create the image कि they deserve to be bombed. And लोग शायद maybe it seems far-fetched, but this is what it is. Somehow it feels like we are manufacturing the consent for our own violence, for us to be annihilated, and this is what is happening. And so what we need to do is we need to shift that narrative, if nothing else, because the narrative is so important. जो साथ का narrative है, it justifies violence against us or our dehumanization. Billions of dollars are spent. First thing we need to do is start reading, start reflecting, critical thinking. हमारे epidemiologists, maybe they are great at their skills, but they don't have this critical thinking of कहाँ से ये start with epidemiology. We don't ask these questions. एक recent book अभी publish हुई है, epidemiological obfuscation, how epidemiology is used to abuse. It's a myth कि science is objective और quantitative data is objective. It is not. लेकिन हमारे लोग critically उसको analyze नहीं करते हैं. They don't really engage with that discourse. So the first thing is read. And अगर किताबें पढ़ने का हौसला नहीं है, स्टेमिना नहीं रहा है काफी लोग में, सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हैं, तो मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने ट्विटर पे या एक्स जब कहलाता है, आई फॉलोड सो मेनी पीपल, हैव बेनिफिट सो मच फ्रॉम फॉलोइंग दीज पीपल या इंडिविजुअल्स, इवन कॉमन मैन जो उनके जो लिखता है. नेक्स्ट इज व्हेन यू शिफ्ट द नैरेटिव यू आल्सो नीड टू राइट, यूज सोशल मीडिया, ऑर्गेनाइज टॉक्स जैसे सौल्या ने अभी ऑर्गेनाइज की है. And then whatever role we have as editors, as writers, as authors, as collaborators, I think we need to start bringing these issues. And when you start doing it, backlash is real. Let me just warn you. But let me also tell you, what a coincidence. Exact 7 years ago, 11th April, 2019, I quit a $2 million study because there were problems with the PI. When I started talking about the dignity of our people, I think that is what it was. And people told me कि आप चुप रहें, ऐसा नहीं करें, and these things will come and bite you. 7 years down the line, I am the one sitting here narrating my story. None of them is here. So I think backlash real है, but just be prepared for it, just be good at what you do. And what's important is from character to community. जब आप अपने values के साथ खुद align होते हैं, you know what you want, where are you grounded, you attract such people. And that is what has happened. And over the 7 years, I have met so many people on the journey. And I started believing, yes, miracles do happen to those who believe. And those, what have been those miracles is the people that I have met on my journey. Those have been my miracles. People who lend you courage when you need, lend you hope when you need, and people who believe in you. And two of these miracles are sitting in this room. One of them is Dr. Babar Hassan, and I'm really grateful for him for being part of the journey during those difficult times. And the new miracle is Saleha.
And I hope, I think I had given up on this journey on global health. मैंने सोचा था जो मुझे आता है मैंने अपने I have written a chapter लिख दिया है. I don't want to engage further. But I think it's Salia की ये success है that she has been able to engage me and bring me back here. And this is my last slide. Dignity cannot be donated. You know this, when you start asking these questions and you're sidelined and you have your own values and you don't believe in this validation system, and then you see other people तो वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, उनके पास ग्रांट्स भी हैं, इंस्टीट्यूशनल पावर भी है, एंड यू फील ऑफ कोर्स ह्यूमन के क्या मैं पीछे रह गया, डिड आई मेक रॉन्ग डिसीजंस. एंड आई वांस वाज हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद माय हस्बैंड. आई सेड पीपल हु डू मच लेस आर बीइंग पेड वे मोर, समटाइम्स 10 टाइम्स मोर. एंड ही सेड टू मी, सर उठा के जीने की जो प्रिविलेज है ना, सबके बस की बात नहीं है, एंड यू आर डूइंग दैट. So at the end of the day, it's what you want to live with. Do you want to have a life that few will taste? तो death तो हम सब ने taste करनी है. Thank you. So we have some comments here. We have a comment from Dr. Murad. What are your views in seeking funding from the global north institutions like Gates Foundation, knowing the tainted reputation? And a follow-up, the major funder of NIH is the US government that has killed 37 million people around the world. Now, how ethical is to receive funding from NIH for people in global south who are themselves the victims of US? I think I did speak about Gates Foundation. I did speak about, of course, the Iran war. The problem I see is that by the time you realize, like I said, I was naive, and by the time I realized, I was too deep into that field. And I think I was fortunate enough that I could quit from that study, which was not working out, and I could say no. लेकिन जिन लोगों ने साला साल इस फील्ड में लगा दिए हैं और कैरियर बना लिए हैं और इतनी प्रेस्टीज है, दे कंट्रोल एंटायर इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट, उनके लिए पीछे हटना जो है ना बहुत मुश्किल है. सो व्हेन यू हैव द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर डिपेंडेंट सोलली ऑन वन फाउंडेशन. अगर आपके पास ऑल्टरनेट फंडिंग है, एंड अगेन आई थिंक इट्स up to you कि आपकी वैल्यू क्या है. There are people who say completely no to Gates Foundation, but there are people who make use of that money. It's if you are able to say no, well and good, then work hard for then we alternate money या source of money for research. दूसरी बात ये भी है कि मैंने तो कोई फायदा नहीं देखा है रिसर्च. मे बी देयर इज बेनिफिट, जैसे HIV को बहुत फायदा हुआ है ग्लोबल हेल्थ फंडिंग से, बट जिस तरह की रिसर्च फंड हो रही है उसका तो कोई फायदा नहीं है. मे बी इट्स अबाउट व्हाट यू वैल्यू एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च दे आर विलिंग टू फंड, एंड इज if it's not compromising your dignity, which I doubt कोई ऐसी होगी, but yeah. Connected to this, cannot be can this funding be considered as reparation, because the money they have right now is built upon the colonial oppression of centuries, and this is a kind of money looted from here. So we need money for doing research. We can sit on the table and negotiate the agenda and what to do and how to benefit the communities that is being researched upon, but just refusing the money that is coming from those tainted people or those tainted governments, because it's coming from them, but it's not actually the money they produced. एक school of thought actually कहता है, which what you're saying, it should be considered reparation, but from what examples that I've shared with you, the kind of research they're going to fund is you are constrained. आप अपनी मर्जी के रिसर्च फंड नहीं, आइडिया फंड नहीं कर सकते. वो खुद डिसाइड करेंगे कि आपके लिए व्हाट्स द बेस्ट. And sometimes what they fund is not the best for you, बल्कि most of the times. So I think it's, are you, if you have a donor or a funder, even if they're in the West, if they are going to fund, for example, research in SAUT, and it's an organized foundation, मतलब ये एक hospital है जिसको लोग trust करते हैं, इसमें dignity is the center. So well and good, I think, but I doubt if they're going to fund your ideas that oppose your dignity. You make a compelling case for staying away from these big funders, etc. However, that's where the money is also. So one example, I mean, you of the funding always comes with its strings attached, with its own agenda, etc., etc.
how can you use that in order to push your agenda? It's not something that we tried, and we had the NIH grant for developing the bioethics program in Kenya. So Pakistan from CBEC over here and Kenya Medical Research Institute got this grant, planted it in Kenya in 2017, and we've been running it since then. And that was primarily for research ethics capacity because they want to do research in Africa and they love to teach only research ethics. They're not interested in clinical ethics. They're not interested in anything else, in bioethics education, etc. However, we took that grant and we molded the program on our needs, which was clinical ethics, public health ethics, etc., 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 including research methodology, research ethics. Everything was combined into that. And we got what we wanted. They got what they wanted, which was certificate courses, etc., etc., training 13,000 people in that. But we also got people who were comprehensively educated in bioethics, so that we now have two master's programs that have emerged from our grant. So it also depends on the team that is taking up the grant and molding it in that fashion. Not always possible, but Yeah. it is possible. But on that note, and I think I would want to add that, and I think Munira, you were there at the meeting as well, and for the general information for the audience. So there was this, we were attending this conference in Ghana later last year in November, and this was on global health partnerships organized by Global Forum for Bioethics and Research. And there was this particular presentation on the accountability of funders, right? Because there's a lot of conversation which is happening. So the NIH overall broadly has been terrible with these kind of, in terms of negotiating. The only reason why they negotiated, and for Gati one, that particular grant was provided as one of the examples where there is room for some sort of flexibility. Surprisingly, the other NIH funding was not. Remember the last presentation that was done? So in that sense, FIC, the only reason why we got, I mean, I'm sure we also had a role to play, but it was also the funders who did show more flexibility to begin with. Oh, no, yeah. But having said, Yeah. sure, and we will, having said that, that avenue has been trumped now. Can I please ask something? Sure. You mentioned that a lot of designs for the LMICs are around low cost outcomes. Don't you think this is something that we really need to focus on right now, considering, an out-of-pocket market? When you compare, and I'm sorry, I'm coming in from a strictly commercial background, and I'm actually conducting a lot of these researches. One of the recipients of, a lot of controversial grants, we can call them, some of them community initiatives, and I completely hear you. And I understand that dignity is definitely a very clear room for improvement there, especially when we go in the communities. But this low cost is actually one of our pain points versus something that is happening in the Western world. Why shouldn't we have these kinds of models coming in that are, if anything, only going to contribute to the overall betterment of the healthcare in Pakistan, in the rural areas of Pakistan? Can I just add an example here? I was personally involved in a clinical trial. So this was back in 2022. And this trial, so this was funded by Gavi, Sabin Vaccine Institute, the white PI. Her hypothesis was that let's look at all the prevalent vaccinations that are available for COVID right now. Can we just give 2/3 of this dose to the African and the Pakistani and the Bangladeshi children to get the same immunogenicity response, because the governments have pulled off their fundings? All the Gavi funds were pulled off. Almost 2/3 of rural Africa was not vaccinated. So we opened up 3 sites. One was Kenya, Aachen, one was Aachen, Karachi, one was in Brazil.
We were looking after all the 3 sites. So, I went there and traveled to these communities where these engagement programs were ongoing. We, to the best of our ability, followed all the protocols, everything, but I can completely understand this stance that we could have also done it in the OPD setting of Aga Khan versus us going into the, Azam Basti wali site. But we had to manage the fund. We didn't have enough funds to ensure that, we had a very strict timeline to get the results in. So we wanted a place where we could get the maximum number of people in. Regardless of those factors, the study outcomes actually helped us a lot. It proved that 2/3 of the Pfizer vaccine, half of Sinovac was giving the same immunogenicity response. And they actually went on and changed the policies in Africa for that, implemented 2/3 of Pfizer vaccine doses. Gavi funded that. So we have examples where low cost being one of the main, parameters is something that is probably need of the hour, considering, the disparity of, how you are making these accesses of very simple things like, so another thing that was, it was literally running in my head, all this talk, 2030, Gavi is going to stop the Pakistan program for, funding the EPI common vaccines. There's not a single manufacturer of vaccines of Pakistan in Pakistan right now. We are not even looking at, in another like 3-4 years, we don't know what is going to be the fate and the outcome of these EPI programs, because if this funding stops, we know what the priorities of our government have been for the longest time, and it's not the vaccination programs. They would have opened up at least enabled, empowered one of the local manufacturers to come to a point now that knowing 2030 was a hard stop deadline. Nothing has been done on that yet. I think there are several questions over here. So would you like to respond to some of the, because we have to keep an eye on the clock and like kind of engage other people also. Yeah. I think the question is not about cost zyada hai ya kam hai. It's about the narrative that's created in our lives in LMIC. If the only parameter is low cost and not quality, then is it really worth it? जब हम खुद अपने बच्चों के लिए जाते हैं, quality versus cost, what do you choose? Quality, of course. तो गरीब के बच्चे के लिए, why? It's the narrative that's being created around lives in LMIC. They deserve less. This should be low cost. It should be. अब आप SIUT में अगर देखें या नेपाल में भी, of course cost matters. जहाँ भी cost matter करती है, जो आप decide कर रहे थे, but not at the expense of the dignity of the patient. What I'm saying is humanity and जो आपका basic right है, quality of health, that shouldn't be compromised. And then rest of the things of course follow. Cost also follows. तो जो आपकी last वाली बात है कि हमारी government की priority नहीं रही है, तो ये हमारा कसूर है. We haven't advocated. आप ईरान की बात करें, 90% of their medicine जो है वो locally produced है. They are not dependent. तो जब तक हम पे भी sanction नहीं लगेगा, हम तब तक नहीं बनाएंगे. फिर तो लग ही जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा है. हम क्या डॉक्टर बाबा Just wanted to quickly address this point that you're making. So exactly. So if you've not proven a low cost solution equality, it is deeply ingrained in colonialism. So for you, a low cost solution is good enough. And for my Gorach Bacha, it is not good enough. So tell me intuitively, why would you buy something at a higher cost if the quality of that at the lower cost is proven equal? तो फिर तो आप बेवकूफ है ना कि आप महंगी चीज ले रहे हैं, right? So it's deeply colonial, right? None of your low cost solutions, whatever you're going to talk about, so neonatal mortality ले लेते हैं पाकिस्तान की 38 per 1,000 है. Total amount of Gates Foundation money that has come into one institution who was to drive the neonatal mortality down to 2 researchers in that institution is close to $150 million. आपकी neonatal mortality is 38 per 1,000, Afghanistan is 40 per 1,000. और आपके कई जगहों पे पाकिस्तान में 43 per 1,000 neonatal mortality है. You are worse than Afghanistan. So I think we have to really ask these questions,
बिकॉज हमारी नैरेटिव ऐसी शेप हो गई है कि हम अपनी चीज़ों को डिफेंड कर रहे होते हैं बैठ के, यार देखो लो कॉस्ट है, हमारी नीड ऑफ द आवर है। कहाँ से नीड ऑफ द आवर है सर? कोई नीड ऑफ द आवर नहीं है। आपके प्रीवियस हेल्थ मिनिस्टर इज, और वट एवर स्पेशल, इज डिफेंडिंग कि रोबोटिक सर्जरी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए है ही नहीं। अच्छा, अपने बच्चे के, अपने पेरेंट के लिए तो आप रोबोटिक सर्जरी करवा दोगे, तो मेरे गरीब के लिए नहीं होनी चाहिए। ओ भाई, doesn't make sense to me, right? That's what the point it is. So we have Dr. Mala online and she has raised her hand. Dr. Mala, you can turn your mic and camera on and join us, please. Dr. Mala is from India, so Yeah. there is Indian Thank you very representation. much, and I just wanted to thank the speaker and the other two people who've been raising questions, and that's very interesting, that it is a colonial mindset. तो यदि यही सवाल है कि 2/3 of the dose produces the same immunogenicity, and by no stretch of imagination have I a very good understanding of biology, I'm taking your word for it. सवाल ये है कि ये रिसर्च यहाँ किया गया ना, तो ये वैलिड है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में 1/3 एक्स्ट्रा डोसेज दे के इतना वेस्टेज जो हुआ है, क्या ये रिसर्च डेवलप्ड कंट्रीज के बच्चों पर लागू होगा? वो है सवाल। Thank you, Dr. Mala. माला इज आवर एसोसिएट फैकल्टी, जो कि आके हमारी पब्लिक हेल्थ एथिक्स पढ़ाती थी, पहले फिजिकली आती थी, अब वर्चुअली आती हैं। And Dr. Imran has also sent a comment. It looks like low cost is synonymous with looking the other way. Dr. Asalan has also commented. Both are our alumnus. Thank you for reigniting our compassion for humanity and inherent dignity. If we valued our own dignity as people, we would be seeking resources outside to do public health research of our people. So we are in large measure as a part of the problem. Before we set to correct outsiders, we need to correct our own priorities and directions. Dr. Asim or Dr. Asma, दो हाथ उठे हैं please. Thank you very much for this enlightening talk. मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि हम लोग गावी से बड़े इम्प्रेस्ड हैं और गावी के लिए वैक्सीनेशन करते हैं। आई कीप टेलिंग पीपल, हमने आज तक साफ पानी के लिए तो कभी कुछ नहीं किया। So we give shitty water to people to drink, and then we give them vaccine to prevent 5 diseases that can be easily prevented. And we are very happy that we get vaccines from Gavi, which are at $9 per whatever, instead of the $24 which the US spends on them. So unfortunately, अभी थोड़े दिनों पहले मैं इनसे बात कर रहा था कि हमारी कोई रिसर्च प्रायोरिटी है अपनी, ना हमने कभी वो रिसर्च की है जो हमने इंडिजिनसली किसी ने सोचा हो कि किस चीज की क्या जरूरत है। अब ये रिसर्च करना जरूरी होता है हमें कि अगर हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो इसके ऊपर स्टडी हो जाएगी आपकी कि कितना पानी पीते हैं जब और ज्यादा आपका बोटल वाटर नेस्ले और एक्वाफिना से जी बिल्कुल वो है, और उस पे रिसर्च हो जाएगी और ये बता देंगे कि जब ज्यादा प्यास लगती है तो ज्यादा पानी पीते हैं। तो आप देखें, मगर दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। और जो आप बात कर रही हैं, आई सिट ऑन AQRC फॉर लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी बिलियंस ऑफ ईयर। I think out of every second meeting, there is this issue of why the hell do not do research at AKU campus? Yes. Especially for maternal health, especially for, I mean, I can understand some studies can't be done there because they don't even take those poor women for things. But a lot of other studies can still be done there, but they're never done. नॉट इवन लोअर मिडिल क्लास, वहां भी नहीं जाते हैं आप लोग? नहीं, अब थोड़ा बहुत या बहुत गरीब इलाके हैं जो बार बार रिसर्च करते हैं। सुल्तानाबाद और वहां जाने लगे, लेकिन ये कि बहुत कम जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे तो मेन कैंपस में तो जाते नहीं। तो सो वी एवरी टाइम वी आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई नॉट, आप जाते क्यों नहीं है? डोनर अलाउ नहीं करता है, डोनर डजंट अलाउ यू। And also, but my question then is, and that's something because as a member of the NBC, one of the things that I then always get surprised at is that if it was, say, for example, if it's a multi-site study which is being conducted in private and public sector institutions both, हमारे पास NBC पे आता है तो वो ERC approval सारी institutions का होके आता है. And we're still seeing the same recurring problems, which we believe should have been picked up at the local ERC level instead of us picking at these problems. अगर हम सिर्फ बेसिक ये सवाल पूछ रहे हैं कि exactly the question, यही वाला सवाल कि ये आप अपने इंस्टीट्यूशन में क्यों नहीं कर रहे भाई, या आप अपने किसी सैटेलाइट सेंटर यानी आपके
अगर एग्जाम्पल AKU का ही ले लें कि हम कहें कि आपके एक मेटर्नल हॉस्पिटल्स भी तो आपके हैं ना, आपके पास गार्डन में अस्पताल है, आपके पास करीमाबाद में अस्पताल है, आपको ज़रूरी है कि आप उधर जाएं किसी भी कम्युनिटी में. So, and not to make it an institutional bashing, but ये सारे issues not just there. It's a recurrent issue, just not in Pakistan, but we've seen that globally as well, with the same pattern at least repeating, right? So then why does it get the ERC approval? That's my question in response to. The donor logic is कि आपको research money goes to an elite institution. That's how वो corrupt करते हैं जो आपके टॉप इदारे होते हैं, and then they control the way you think. तभी हम सिर्फ इस तरह की रिसर्च करते हैं कितना पानी पिए तो प्यास लगेगी. जो आपकी इंडिजिनस थॉट है ना वो फंड ही नहीं होती. लेकिन फंडिंग जो या बेनिफिट बहुत गरीब कम्युनिटीज को होना चाहिए जिनको पास खाने के भी पैसे ना हो शायद. वी कांट गो टू, और यूएस की सारी रिसर्च मिडिल क्लास फैमिलीज में होती है. सो बट वी कांट फंड आवर, यहाँ रिसर्च हम नहीं कर सकते मिडिल क्लास. Dr. Asma. मेरा कुछ अलग तरीके से कमेंट है. वो ये है कि कॉलोनियलिज्म जिस पे हम सब अभी तक उसके असर में हैं, तो उसका जो मेन जो लाइफ लाइन है वो है डिवाइड एंड रूल. तो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो मैडम है हमारी, वो भी वही बात कर रही है जो हम कर रहे हैं. हम अफगानिस्तान वालों को भी समझते हैं, हम ईरान को देख चुके हैं, वो भी हम जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा सीना तान के चलते हैं. तो क्यों ना हम ये बॉर्डर्स ख़त्म करें और मिलके काम करें ना. इंडिया से क्यों नहीं दोस्ती कर लेते. इंडिया से इतनी सारी दवाएं हैं, अब ग्लोबल फंड ख़त्म हो रहा है जैसे आप बता रही. और यस, और मैं इन्फेक्शियस डिजीज की डॉक्टर हूँ, तो HIV की ड्रग्स ख़त्म हो रही हैं अब. ग्लोबल फंड ने कहते हैं कि हम नहीं करें क्योंकि आपके पास बहुत खुद होती है, वो चले गए. और HIV की ड्रग्स हमारे पड़ोस में है भाई. हम पड़ोस में दीवार क्यों खड़ी करके वहाँ से नाराज़गी पैदा कर चुके हैं. इतना हमें फ़ायदा होगा अगर हम मिलजुल जाएं. ईरान ने हमें सिखा दिया है ये बात. जिस पे कमेंट. थैंक यू. बात तो सच है मगर बात है. Yes, so just wanted to ask a question, Munira. So, yes, so we're becoming like a echo chamber, kind of ventilating, right? So, but just like Suhaila wali baat kiya, how do we now practically take steps, okay, of really change? Ek to, one thing that you have taught me, have a seat on the table. If you don't have a seat on the table, the other one will define your narrative, right? So we're gonna define our narrative. So what can SIUT do to have a seat on the research table of Pakistan and really say कि नहीं भाई ये अब जो है ना अब आप पीछे हटें, हमें आपको बताना. Number one. Number two, ये कि sir अगर आप if you are sitting on an ERC, why do you then allow an ERC to happen if there is no care pathway? If they go in, there is data from sites that have been funded by the Gates Foundation, by an elite institution, where they showed कि जब माँ को बोला कि बच्चा को आप जिन्ना अस्पताल ले जाएं, और माँ ने कहा नहीं मैं अपने घर लेके जाऊंगी सेप्सिस वाले बच्चे को, दोनों के आउटकम सेम. सो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आई वहाँ पे. सही है. अच्छा क्यों नहीं आया वो बच्चा? क्योंकि वहाँ पे फंड कौन करेगा क्लिनिकल पाथ पे? वहाँ पे फाइनेंस बोलता भी ये तो फंडर ने तो दिए नहीं आपको इसके. सो वो डीपर क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा. वो डीपर क्वेश्चन ERC ने नहीं पूछा. डेटा मॉनिटरिंग सेफ्टी बोर्ड ने नहीं पूछा कि भाई खुदा के बंदे, यू आर शोइंग मी दिस डेटा दैट व्हेन यू सेंट देम टू जिन्ना and the mother said कि नहीं, those went to Jinnah, those who went home, both had the same outcomes. No clinical person asked that question. Nobody stopped that ERC there कि नहीं भाई होएगी नहीं, we'll return the Gates money. Nobody. आप ये करके दिखा दें, आपको ERC की पोजीशन से हटा देंगे वहां पे. And there's no question, nobody will ask that question, right? And when they ask questions, we get labeled. We all get labeled as difficult people, as people who are difficult, who are not diplomatic, who are going to be, and then eventually what happens? You exit. You exit an organization like that. कि भाई तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे. So sir, ये question है ना, was how do we make that noise? So, I mean, I was just connecting. We don't want a seat at the table. We want to make that damn table. I think that's what Munira is saying, like make our own table, I guess. That's one of the things, being very self-reliant. And I think from within SIUT, I think one of the things that I've learned and I've only been working here for 11 years, is that we're very self-reliant. I mean, interestingly, मैं पीछे service lift पे जा रही थी, तो पुराना CBEC का 2008-9 का बोर्ड नजर आया और उस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई थी, एंड आई वाज जस्ट
surprised and touched and humbled and all of that. CBEC का लिखा हुआ था कि indigenously funded by SIUT. Okay, and they were talking about no reliance on external funding. And I think that's one of the triumphs, because bioethics program globally, I think जितने भी हैं, and I'm talking पाकिस्तान में, अफ्रीका में जितने भी programs हैं सारे NIH funded, FIC funded हैं. सिर्फ हमारा इधर एक इंडिजिनस फंडेड प्रोग्राम है CBEC का, जो हम NIH वाली कैमरी वाला कर रहे हैं, वो डिफरेंट चीज है. This is something that we have indigenously SIUT has funded. So there is this example. We have low numbers, but हम वही कह रहे हैं ना, हम cost cutting पे नहीं जा, cost कम नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग quality पे compromise नहीं कर रहे कम numbers लेके. डॉक्टर नताशा ने भी कमेंट किया है. डॉक्टर नताशा, यू कैन इलैबोरेट. आपने बहुत छोटा सा कमेंट किया है on your comment by opening your mic if you can. Dr. Natasha is also an associate faculty of CBEC, based in Lahore, molecular biologist. Natasha, can you speak up? So she says the poisonous red apple comes into a story again and again, repeated because of the temptation, the lure of the apple. Sorry, researchers get sorry. हाँ मैंने भी ली है. हाँ तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताना चाहिए था. I think if you start with answering Dr. Babar's question with narrative shift, अपना भी तो narrative shift करें. यहाँ पे किसी पास पैसे हैं, किसी के पास तो वो साहब किंग बने हुए हैं. लैंडसेट पे लैंडसेट पेपर है तो हम समझते हैं बहुत अजीम है. Everybody wants to work with them. Everybody student wants to write with them. We have to start changing our values ourselves. कि हम वाकई इनको why do you want to respect them just because they have money or they have publications in Lancet में? नहीं, हमें अपने values खुद shift करने हैं, you know, impact को value करना है. And I think introduction में number of publications तो हटा ही देनी चाहिए कि someone has published here और इतना. What actual impact have they made? कितने लोगों को इन्होंने train किया है, कितनों का mentor किया, कितने लोग इनके आगे निकले जो इनसे भी आगे निकल गए हैं शायद. You know, a man is known by the company he keeps. The kind of team that you have, अगर आपसे कोई आगे ही नहीं गया है, then do you really want to work with that person? एक और बात ये कि हम अपने जर्नल्स पे क्यों नहीं छापते? हम अपने जर्नल्स में छाप के अपने जर्नल्स को उठाएं ना. वही बात है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी. हम जर्नल्स में कम छापेंगे अपने, तो अपने जर्नल हमारे नीचे ही रहेंगे, ऊपर कैसे आएंगे? हम अपने रिसर्च अपने जर्नल्स में छापें, उसको उठाएं, लैंसेट के बराबर लाए ना. किसने मना किया है? कम ज्यादा के अलावा हम ना नहीं, हम बाहर छापेंगे, बाहर के जर्नल्स में छापें. लोकल जर्नल में हम नहीं छाप रहे. ये प्रॉब्लम है. बाहर के लिए भी क्वालिटी पेपर्स नहीं आते, फिर हम रोना डालते हैं कि हमारे पेपर एक्सेप्ट नहीं होते. So, Professor Fahad Azam online has a question. He asked that we discuss few overlapping concepts and how, to what extent does the concept of haves and have-nots divide overlaps with the idea of colonization and decolonization debate. Are they not always synonymous or not? So he wants some clarity. The idea between haves and have-nots, and its overlaps with the colonization. Have not, sorry. So I think the divide between rich and poor in a society, is it not synonymous with the debate of colonization? How colonization is different from this debate? I think the the way purely it Marxist thing. operates may be the same, but colonization तो is very different than, you know, जो आप जैसे coloniality of the mind है कि आपके यहाँ जो अंग्रेज की तरह बोलता है, उठता है, बैठता है, या वहां गया है, ही सीन मोर रिस्पेक्टेबल. हम अपनी जुबान बोलना पसंद नहीं करते हैं, इंग्लिश इज साइन ऑफ इंटेंट, वो है कॉलोनियलिटी. बाकी पावर किस तरह ऑपरेट करती है, ऑफ कोर्स दैट इज द सेम बिटवीन रिच एंड पुअर विद इन द कंट्री और बिटवीन कंट्रीज. So I think what he wants to say is that yes, colonization and this Marxist notion of divide between rich and poor overlaps on some places, or Lenin ने भी कहा था कि the height of colonization, capitalism is imperialism. लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से प्ले आउट होता है इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक गरीब गोरा भी आ जाता है तो दैट हैज़ मच मोर प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट अटैच्ड टू दैट पर्सन एज कम्पेयर टू अ रिच काला और ब्राउन. सो वो कॉलोनाइजेशन एक बहुत डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर रही होती है. गोरे का बेकार सा पेपर इज़ वर्थ मोर देन ब्राउन या काले का बहुत अच्छा सा पेपर. सो वो कॉलोनाइजेशन एक बहुत अलग तरीके से भी ऑपरेट कर रही होती है. डॉक्टर नताशा कह रही हैं कि उनका माइक काम नहीं कर रहा था.
And she also says that they are working in silos, so the funding the papers, etc. are attractive. Dr. Uzma Sumro asked, are global health programs doing enough to address ethnic disparities and ethnicity and economic disparities? कौन से ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम्स? हमारे पास तो खैर है ही नहीं कि ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम. Dr. Uzma Sumro, अगर आपका mic काम कर रहा है, you can also join by just unmuting yourself. Dr. Imtinan Sharif also says that we do not promote our journals at all. Medical journals Pakistan have an impact factor less than 1, and also most of the journals are recognized by PMDC, which creates a lot of issues for upcoming young researchers. So, मसला ये है कि हम लोग जो है हेल्थ रिसर्च करते हैं, रिसर्च फॉर हेल्थ नहीं करते. तो जब आप हेल्थ रिसर्च करते हैं तो देन यू आपका ना कोई हेल्थ आपको हेल्थ प्रायोरिटी की जरूरत है, ना आपको सिर्फ फंडर की जरूरत है. तो जो फंडर मिलता है उसके साथ आप रिसर्च कर लेते हैं. उसका क्या ताल्लुक है, उसको क्या करेगा आपके लिए, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारा, अनफॉर्चुनेटली. और इसीलिए आपको जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता इम्पैक्ट फैक्टर किसको मैटर करता है, क्या करना है. हम पाकिस्तान में तो इम्पैक्ट फैक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं है. एंड अगर आपको लोकल जर्नल में छापते हैं तो कम से कम ये फायदा होता है कि लोकल लोग कुछ पढ़ लेते हैं, एफसीपीएस वाले डेजिटेशन वाला कुछ कर लेता है. वो जब बेचारा लैंडसेट का, तो आप जा ही नहीं सकते, आपके पास आप ना लैंडसेट पढ़ सकते हैं ना बीएमजे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं. छापने की बात छोड़ें, वो तो उसमें तो बहुत सारे देने पड़ते. नहीं, वो तो हमें वो वेव ऑफ कर देते हैं कभी कभार. दे आर वेरी जेनरस लाइक दैट. आई हैव गॉटन quite a few fee waivers in when I'm published. So you got the charity? I got the charity. You need to have access to the right editors, relationships not fair. I think more than अब तो खैर even within the West there is a movement to not publish in high impact journals. एक पेपर पब्लिश हुआ था 2022 में, not in a journal, कोई वेबसाइट थी The Wire करके. उसका टाइटल भी यही था कि Stop congratulating colleagues for publishing in high impact journals. लेकिन वो किसी ने, आई थिंक वो ब्लॉक हो गया है पेपर. आई कुडंट एक्सेप्ट इट. मुझे आज शेयर इंडिया है ना, तो वो इंडिया के वो लोग ये निकाल देंगे. ये फरीद निकाल देंगे. तो इट्स ए मूवमेंट, क्योंकि दे आर पता है बहुत पैसा. इट्स अगेंस्ट ओपन साइंस, सो पीपल आर फॉर ओपन साइंस, तो दीज जर्नल्स डोंट हेल्प. हमारा मसला तो खैर कुछ और. आई मीन वंस इन ए वाइल पब्लिश करना इज गुड. आई थिंक दैट दे फाउंड योर वर्क टू बी वेरी गुड. लेकिन अगर आप बार बार पब्लिश कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, या उसका आप फायदा नहीं उठा रहे हैं ना उस क्रेडिबिलिटी का, या उस जैसे इफ यू हैव देन सीट एट द टेबल, हाउ आर यू देन लाइक स्पीकिंग अगेंस्ट द इश्यूज दैट इफ आई कैन सी व्हेन आई वाज ए नोबडी, आई वाज ए जूनियर फैकल्टी. तो बड़े लोगों को नहीं नजर आता होगा जो वहाँ बैठते हैं, उठते हैं, सुनते हैं. दे डू फील कि हमारी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बट कैरियर टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग. एक चीज, sorry, I'm Dr. Jawaharlal. I am from medicine department. एक चीज मैं मतलब ये कहना चाहूँगा कि आज की इस फॉर्म पे हम जिस तरह मैडम ने बात की कि हम अपने लोकल जर्नल्स में क्यों नहीं करते, तो क्या हम SIUT का एक रिसर्च जर्नल नहीं बना सकते अपना? उससे पहले खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा थोड़ा सा और. हाँ, तो इंशाल्लाह हो जाएगा कि ना, पहले खुद ही को बुलंद देता है. उससे पहले जो है ना हमारा सीबेट का न्यूज़लेटर है, उसमें छापे. हाँ, वो मैं ऑफर कर रहा हूँ उसके लिए. नहीं, वो लिख रही है, मुनीरा भी लिख रही है, डॉक्टर बाबर भी लिख रहे हैं. सो आई हैव माय आईज. डॉक्टर आसिम ने भी कंट्रीब्यूट किया है. सेमी एकेडमिक हमारा न्यूज़लेटर है, तो जर्नल की तरह तो नहीं है, लेकिन उसकी रीडरशिप यहाँ लोगों में उससे प्रमोशन होगा, प्रमोशन में काउंट होगा. So हमारे डॉक्टर सैयद इमरान बुखारी ने कमेंट किया है, बिग डिबेट in the north versus south on colonization of research. At a personal level, I may harbor the same feeling with regards to less reputable organizations. Do you think the issue is always collective and not the individual? I think the individual does have a choice. And people have used organizations for their own personal careers. So you cannot wave off responsibility as an individual. It may be collective, but within that collective, there are why certain individuals choose to be different. अच्छा, मुझे एक और भी ख्याल आया, जो मैंने एक किताब पढ़ी आज कुछ दिन पहले, इस्तेमार की नफ्सियात.
बहुत जबरदस्त किताब, Sorry, इस्तेमार की नफ्सियात। इस्तेमार मीन्स इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म द साइकोलॉजी ऑफ इम्पीरियलिज्म। ये तो ये बड़ा मसला है कि उर्दू किसी को नहीं आती, प्रॉब्लम है। ओके सो और सब बैठ के ये कह रहे हैं कम्युनिज्म से हटना है और उर्दू ही नहीं आती। ओके सो उस बुक में जो ना जो बहुत मजे की बात ये कही थी कि हमारे अपने भी कॉलोनाइजर्स हैं, हमारे अपने भी, यानी कि ब्लैक मतलब ब्राउन हम तो ब्राउन है, काले नहीं है, तो काले बिल्कुल नहीं है, तो ब्राउन भी कॉलोनियल माइंडसेट के साथ हम पे हुकूमत कर रहे हैं। तो हमारे पास कई लेयर्स हैं, एक लेयर नहीं है, एक तो गोरा लेयर है, फिर दूसरा एक काला लेयर भी है बीच में हमारे, उसको भी तो तोड़ना है। ब्राउन साहेब ब्राउन लेयर यू कैन से, काला नहीं कहेंगे, चलो ठीक है। सो 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 ये हमारे पास लेयर्स हैं एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि हमको कई लेयर्स तोड़ने हैं, तब जाके हम वो हिस्सा वो माइंडसेट तक पहुंचेंगे जो हमें चाहिए। मेरे ख्याल में सो मेरी क्लासमेट थी, उसके भाई ने अमेरिका में शादी कर दी और उनकी अम्मा बहुत परेशान थी, क्या ना कल्चर मिलता है ना फलाना मिलता है, गोरी से शादी कर ली। बहुत 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 ही डांट पड़ रही थी उसको बेचारे को। आखिर में उन्होंने कहा अबे कमबख्त करनी थी तो गोरी से करते, काली से करके आ गए शादी। अफ्रीकन अमेरिकन की शादी की थी ना, गिर गया। This is how we are. Like, so this question came, you talk about the backlash, right? So, kind of borrowing from Adam Grant's book, कि character तो लो अपनी चीज होती है, character skills जो कि teachable होते हैं. So as a clinical psychologist, what can we do so that we can teach our mentees to have that character skills, to be assertive enough, to have a narrative, to have their own epistemology, and be brave enough to handle the backlash. जबकि नॉइज इतनी है आसपास में कि यार 4 घंटे के बाद गेट्स फॉर्म, वो आपको बिजनेस क्लास मिल जाता है, आपको NIH कैप मिलता है, आप 30-35 लाख रुपए घर लेके जाते हैं, मुझे 2 और भी पूरे नहीं मिल रहे थे। वो भी नहीं, और आप उस कम्युनिटी में एक दफा असल भी काम चक्कर नहीं नहीं था लगाते जिस कम्युनिटी में जाने के लिए आपने डबल कैबिन और फॉर्च्यूनर्स खरीदी हैं। तो हाउ डू यू रियली काइंड ऑफ दिस नॉइज इज सो मच कि इसके लिए एक बहुत डिफरेंट लेवल, सो व्हाट कैन वी डू as a psychologist? What would you say that we can impart in our, how can we do that? I think character cannot be imparted. It has ये अंदर से आता है, and you can model the right values for them. You can model how you navigate backlash. You can model how you work hard and how you get into Lancet despite being a nobody. I got into Lancet Global Health, फिर हमने NEJ में 2 publish किए. So I think the academic incentive are inevitable. लोगों को हमेशा चाहिए होंगे, they would, अगर आप career में हैं, of course they would want कि अच्छी जगह पेपर पब्लिश हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए, but then you have to show an alternative path. तब ऐसा भी नहीं है अगर आपके पास, चलो हम बिजनेस क्लास आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं तो आप एकेडमिक इंसेंटिव नहीं ऑफर, दैट आल्सो नीड्स टू बी ऑफर्ड। वो आपको मेंटोरशिप या वो ट्रेनिंग के, अगर आप, एंड दैट देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस, जो आपको पे पैसा इन्वेस्ट करता है ना, यूजुअली दे डोंट इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, क्योंकि वो आपको स्किल सेट इसीलिए पीछे रखता है आपको, या पैसे इसलिए देता है कि आपको देन इट्स इजियर टू कंट्रोल। You need to find people who are willing to be invested in, who are willing for their skills to be upgraded, and that's where you bring the right people. It starts at recruitment. हम लोग डिग्री देके हायर करते हैं, अच्छा यहाँ से पढ़ा हुआ, लम्ब से पढ़ा हुआ, IBA से पढ़ा हुआ, नहीं, इट्स अबाउट व्हाट वैल्यूज दे ब्रिंग। एंड और पैसा किस हद तक, कितनी बिजनेस क्लास फ्लाइट्स ले लेंगे आप, कितना ट्रैवल कर लेंगे, कितना पैसा, हाउ मच इज इनफ। तो ये कुरान की आयत याद आती है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तक कब्र में नहीं जाएंगे तो ये ग्रीड लगा रहेगा। There comes a level जब ये कैप हो जाता है। I mean, I've seen everything. I think the fact that I was able to quit, कि मैंने वो दुनिया देखी, मैंने वो ग्लैमर देखा, मैंने ट्रैवल किया, मैंने जिनीवा में प्रेजेंट किया, WHO में, मैंने यूनिसेफ के इनवाइट्स आए थे न्यूयॉर्क के। आफ्टर सीइंग ऑल दैट आई सेड नहीं, आई कांट अलाइन हियर। बोस्टन की फेलोशिप की ऑफर थी, मुझे कहा अप्लाई करो। मैंने इनिशिएटिव किया, मैंने कहा मुझे नहीं करना, मैं सारी उम्र गोरों के नीचे लग के उन्हीं के काम करते रही, आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, जिससे मेरे अपने लोगों को फायदा हो। बट आई थिंक लोगों को थोड़ा सा ये एकेडमिक इंसेंटिव देखना चाहिए। आई थिंक दे आल्सो डिजर्व कि आप उनको अच्छा कराएं और अच्छे पेपर में पब्लिश कराएं, देन इट्स आल्सो देयर राइट प्रॉब्लम। I think
Yeah, can you use your mic? I'm already vocal enough, so I'll still use We have my a lot mic. on. Okay. So I think I'm the most junior most year. I am an MS urology resident, year 2. And after all this discussion, I believe that such more talks should be forwarded to the residents because their mind are more raw. They need to think about the humanity, the dignity, and the empathy part more. So I would really, first of all, thank you so much for this conversation that we've had today. I literally got an insight into a lot of things. And secondly, I would really request the CPAC team to conduct these sessions with the residents. They need मेरे साथ this. serious I रहते need हैं this. Thank you. Thank you so much. हाँ हाँ ये यूरोलॉजी वाले सीबैक से बहुत काम करवा रहे हैं भाई अच्छा so if we don't do we have any more questions online Fareed? I have a few Comment? different comments. Sana Mirza carrying there are a lot of red tapeism and delays and all those stuff, and you cannot publish in your own institutional journals. So इसलिए people go opt for journals abroad. And Dr. Abda Shaheen is saying that while we are talking about decolonization, what about intersectionality patterns in our own systems, coloniality of gender, patriarchy, ethnicity, class, caste, how to address these issues? So बहुत सारे issues हैं यार, उन सबको address करने Start के with लिए self. yeah. Start with self. Be the change you want to be, you know. And I've started with like, अगर आप इसको जो advice कर रहे हैं, आप खुद तो practice करें ना पहले and see how hard it is. अगर if I am अब जहन में मुझे नहीं आ रहा, like validation seeking जिसे आप कहते हैं ना कि I start posting about myself 2 साल हुए हैं और किसी भी सोशल मीडिया पे मैं अपनी अचीवमेंट पोस्ट नहीं करती हूँ. And that's a deliberate decision that I have taken. Why do I want even to be validated? But why do I want them to see my achievements? You know, it's the vision that I want people to believe in. So I may write about my vision. I may publicly post. लेकिन मैं personally कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से invite I actually I don't want to, because I think the way validation is one of the factors that people try to control you, या people नहीं या जो भी agenda से control के. For example, अगर आपने सीखना है, तो when I started as a research associate, मेरा पहला paper, I started in 2009, मेरा पहला paper as a first author was in 2015. So I waited 6 years till I could write. But I also knew कि research skills के और इतने सारे skills build हो रहे हैं, मुझे actually I never even asked कि मेरा नाम paper पे आया, नहीं आया, कब आएगा, नहीं. क्योंकि research is also about communication, it's also about emails, it's also about coordination, it's about financing, it's about budgeting, it's about talking, it's about traveling, it's about being seen. You know, all of these things were being built. जब आप पे कोई इन्वेस्ट कर रहा हो तो फिर आपको भी सब्र दिखाना पड़ता है, you know. आप बार बार उंगली करोगे, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, then it's not gonna happen. This is where what you were asking is, as mentees, as people who want to grow, who want to be mentored, then you also bring in certain skill sets, you also bring in certain characteristics, you also bring in certain values. And I also believe to change the world, mentor those who want to change the world. So if anybody is ready to or wants to change the world, I'm happy to mentor. That actually fits very well into that frame of reference that we want to change the world. And we are doing it one graduate at a time. So थोड़ा सा काम कर ही रहे हैं जो जिसमें आप presence की बात कर रही हैं. So this fits in very well. In fact, what you're saying, global this aspect of ethics discourse has actually not been a part of our overall curriculum at any level. In any program जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो ये we are getting Dr. Munira over here is one way of filling that gap. First, knowing that there is a gap, acknowledging that there is a gap and there is a problem, and then trying to fix it. And the fix it is what she just said, start with self. And there has to be more than just one self. So selves. So बहुत सारे सेल्फियाँ होंगी. All those सेल्फास भी होंगे, लंबे लोग भी हो सकते हैं, छोटी सेल्फियाँ भी. बिल्कुल हर तरह से. So that's I think so I think this is a very important area that we've finally been able to actually get the right person to talk about. These are uncomfortable things that he is talking about. कि जो जहाँ से फंडिंग मिलती है वो वहाँ क्यों है वो हराम और नापाक भी कहा है उन्होंने. So but मैंने कहा हाँ मतलब हाँ but उसको यही कहा है ना, उसको अब दे किस तरह से उसको. So how do we tackle all of that? So this is an important thing I think, and
the discomfort जो आप कह रही हैं across the fence, वो अभी जिस तरह से माला ने बात की, उनको भी यही प्रॉब्लम, वो भी exactly she's echoing the same issues. So the issues are common. We have to acknowledge them, we understand them, and then we can start grappling with them. And one way of doing it is by education, as you said, residents के अलावा or levels के ऊपर, and that's what we are planning to do now also, to make this into a formal thing. So on that note, I think I'd like to thank Dr. Mira for a very important session. And since this is a very landmark session, because इसके बाद और कोई और session हो नहीं सकता, इसलिए हम ये building को तर्क कर रहे हैं. So next CBEC forum inshallah will be at the SIUT Trust Hospital on Shara Faisal, the former Regent Plaza. उसको announce कर देंगे हम कब होगा और क्या होगा उसके अंदर, and we expect people from of course the city, तो उनके लिए ज़्यादा आसान होगा, बस SIUT के लोग भी गाड़ियों में भर के वहाँ भी तशरीफ लाएं. We'll have to figure it out. It's easier for you, yes, बिल्कुल हाँ, it's easier, much easier for you. So but that's हम लोग किसी भी बिल्डिंग में 10 साल ज़्यादा रहते नहीं है. उस बिल्डिंग में तकरीबन 10 साल हो गए थे, हम मूव कर रहे हैं यहाँ से, तो अब वहाँ जा रहे हैं, कब तक वहाँ रहते हैं पता नहीं, but that's the plan inshallah. So on that note, again, thank you very much, Dr. Munira, for a very wonderful. वहाँ आ गया, glad that you're shifting.